But he doesn't decimate them. He doesn't kill Tughlaq. He So decimates why- the army. Why doesn't he kill Tughlaq? That is something, that is a basic problem with these Mewar Maharanas. I think they were stuck up somewhere. I don't know why. खुद का पर्सनल ग्रैंडियर था वो, मैंने इनफैक्ट अपनी बुक में मैंने कमेंट भी लिखा है कि यदि उस राक्षस को निर्बीज कर देते, क्योंकि ये रक्त बीज है, ये तो फिर आ जाते थे, फिर कर देते। बट वो एक सेपरेट डिस्कशन है। हम देखिए पोस्टेरिटी में हम उनको एनालाइज कर रहे हैं मैम, हमें नहीं पता उस वक्त की, वो हो सकता है कि मॉरल कंपस क्या काम लोगों करे। की नजरों में गिर जाते हैं। लोग कहते थे, आप ये देखिए मैम, इस 1100 साल में केवल ही महाराणा पूजनीय नहीं है, वो मेवाड़ की जनता जिसने इनका साथ दिया। बिल्कुल। द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब जो प्लेन्स थे, जिसको महाराणा हमीर ने सबसे पहले यूज किया, प्लेन्स से अपनी पूरी पॉपुलेशन को वो माउंटेन्स में शिफ्ट कर देते थे। मतलब लाखों लोगों का पलायन, बिजनेसेस, क्रॉप्स, ट्रेड, गुरिल्ला सब वॉरफेयर। खत्म, छोड़ दो। पहाड़ों में भीलों के पास आ जाओ, भीलों के पास गूलर यानी अंजीर के पेड़ फल खा के जिंदा रहती थी, छोटे छोटे बच्चे, वो जो गायों भैंसों का थोड़ा बहुत बकरियों का दूध निकल जाए। फॉर इयर्स द स्कॉच, क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर अटैक करने वाली जो वो फोर्सेस आएंगी, उनको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। उनको रसद के लिए दे हैव टू डिपेंड ऑन दिल्ली। दिल्ली से रसद निकलेगी, रास्ते में लूट लेंगे अपन उसको। तो sacrifices that these people, मेवाड़ का तो एक एक पत्थर वंदनीय है। It was not only the Maharanas. So we can't say कि they forgave them and it was, इनको मार देना चाहिए था। हम उसको easily analyze इतना linear, क्योंकि बंदी को मारना again, you see, because he is defeated, he is under your custody, that again the moral compass may have. we don't know 13th century की 14वीं शताब्दी की बात है। So now, but there's a beautiful line in which Todd quotes what Hamir says to Tughlaq when he's releasing him, and he releases him after a heavy penalty. He takes entire Rajasthan and Sindh and even Madhya Pradesh in written. These are my territories now. He says yes, they are now yours. So much so for the Delhi Sultanate, right? So Delhi Sultan is conceding Sindh, Rajasthan and half of Madhya Pradesh. Yeah, but if he had killed him, he could have had the whole Sultanate. I mean, Ah. is it not correct? Yes, maybe, I don't know. Maybe, we don't know that. But the Delhi Sultanate lie gets exposed here, and he says, I'm releasing you. I'm not killing you. But should you attack Mewar again, trust me, I will not fight you from within the confines of Chittor. I will confront you out of Chittor. मैं तेरे को वहीं आके मारूंगा। That's, and then I think this should be quoted. I should read this from this book. So I'll first read that line where he says to Tughlaq, and what first the penalties. After suffering a confinement of 3 months in Chittor, he says 3 months, nor was liberated till he had surrendered Ajmer, Ranthambore, Nagaur, Shivpur, besides paying 50 lakh of rupees and 100 war elephants. ये कौन दे रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक, the Sultan of India, is giving to a petty king of Mewar. Hamir would extract no promise of secession from further inroads, but contented himself with assuring him that from such he should be prepared to defend Chittor not within but without the walls. कि अगली बार तू यहाँ आया तो मैं चित्तौड़ के अंदर बैठ के नहीं लड़ूंगा तेरे से, मैं बाहर खुले में आके लड़ूंगा तेरे से। Banbir, the son of Maldev, offered to serve Hamid, who assigned the district of Neemach, Jiran, Ratanpur and Kerad to maintain the family of his wife in becoming dignity. And as he gave the grant, he remarked, ये सुनने लायक बात है, हमीर ने क्या कहा उसको, क्योंकि अब तक तो वो तुगलक और मुसलमानों की सेवा कर रहा था ना। This is very moving. Eat, serve, and be faithful. You were once the servants of a Turk, but now of a Hindu of your own faith. You were once
for I have but taken back my own. मैंने जो चित्तौड़ लिया है ये मेरा ही था. The rock moistened by the blood of my ancestors. इस किले की एक चट्टान मेरे पुरखों के खून से रंगी हुई है. The gift of the deity I adore. And who will maintain me in it, जो मुझे यहाँ राजा बना के रखेगी. Nor shall I endanger it by the worship of a fair face as did my predecessor. मालदेव ने तुगलक की करी थी ना कि सिर्फ गोरी चमड़ी देख करके तुम उसको, मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी. When we shortly after carried Bhaisarorgarh by assault, and this ancient position guarding the Chambal was again added to the glorious Mewar. The chieftains of Rajasthan rejoiced once more to see a Hindu take the lead, paid willing homage and aided him with service whenever required. Hamir Singh ruled Mewar for 60 years. Wow. The most critical period of Mewar was ruled by Hamir Singh. When he regained Chittor, he filled the khajana of Chittor because by divine intervention, as if the Divine Mother was preparing us for the next 500 years of war with Islam, because it was his son Kshetra Singh, then his son Lakha, then his son Mokal, then his son Kumbha, then his son Raimal, then Sanga, then Uday Singh, then Pratap, then Amar Singh, then Karan Singh, then Jagat Singh, and then Raj Singh. इस पूरी सीरीज को लास्ट तक पैसे की कमी नहीं आने दी गई, बिकॉज हमीर सिंह ने इतना सोना, इतनी वेल्थ इकट्ठी कर ली थी कि इतनी जनरेशंस तक लड़ाई चलती गई. कैसे की होंगी वो, उसकी इकोनॉमी की कहानी? They looted the Muslim caravans. Not their own people. Never. ये तो मान सिंह ने भी नहीं किया. मैं जो जयपुर के राजपूतों की बात कर रहा था कि मान सिंह ने भले अकबर के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी भी नगर नहीं लूटे उस आदमी ने. वेल्थ को, हिंदुओं की वेल्थ को, हिंदुओं की स्त्रियों को, इट वॉज जयपुर राजपूत who preserved. Todd here says, he was also a great patron of art and the kind of buildings he made. Hamir Garh आज भी है. Hamir died full of years, leaving a name still honored in Mewar as one of the wisest and the most gallant of her princes, and bequeathing a well-established and extensive power to his son Khet Singh.